Hello there, this is Dr. Narayan coming to you from NeoTrader with yet another edition of Charts and Beyond. This is episode number 38. एपिसोड नंबर 38 का चार्ट्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। और आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 तारीख जुलाई, 7th of July। एंड एज यूजुअल मैं सारे खबरें ले आ रहा हूँ। सारे खबरों से लोगों को जो whatever opinions and constructs that they make out of it, उससे they think about it and then prices emerge, and then out of the prices they get plotted on the chart, and then viewpoints form, and that is how it gets plotted on a chart and then starts becoming predictable and forecastable. So this is where we are as far as charts and beyond is concerned, and that is what the opening slide is all about. And if you have not subscribed to our channel, NeoTrader, please do so. On This is on YouTube. It's absolutely free to view, and I do this periodically, once in about 10-15 days. I might increase the frequency, but I'm trying my level best to make it kind of regular. But ठीक है, एक 10-15 दिन में एक बार तो आ ही जाता है। तो महीने में 2 या 3 चार्ट्स एंड बियॉन्ड के एपिसोड तो आते हैं, जहां पर मैं मैक्रोज डाउटेल्ड इनटू माइक्रोज का काम करता हूं। सो for those who are coming in for the first time, this is not trading advisory section. This is about how to read the signals on the charts and place them in the context so that we can make a larger idea, get a larger idea of how to look at markets and then make a strategy जहां पर कैसे position बनाए ताकि we can take a bigger advantage of market. So that is the objective with which we are looking at charts and beyond. So let us go into slide number one. Slide number one is a plate. What is called as an asset plate. ये asset plate में क्या है? ये ranking by returns in the first half of 2026. ये this has been, of course, prepared by somebody else. It is not my work, but I borrow generously from the public domain, which is all the information which is there. Now, what is this showing? Ki bhai, this shows first half of 2026, and then it is showing 1 year, 2 year, and like that 15-20 year returns. So this is the long term return. तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे सरप्राइजिंग चीज आप यहाँ देखें तो the surprising cheese is 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 7 year. ये सारे रिटर्न में silver as a commodity has been the topmost return. Now that is something extraordinarily surprising कि silver ने इतना consistency के साथ returns दिया है. So investment into commodities. Second, if you have seen, gold has also been in a 1, 2, 3, 5, and 7 year returns. Gold has also been performing. So gold and silver have been the top performing asset classes across so many years. And then, of course, you got various other countries and all that. But then what comes up on the top? In the top in 2000, in 2026 is small cap index. Small cap index has made about 6.3% gain, right? And short-term debt. And then if you go down further in the list, gold this year is only 5.4 and silver is actually minus 4.7. तो ये जो 7 साल की रिटर्न थी गोल्ड और सिल्वर में, उसमें थोड़ी सी टेम्परिंग आ गई. तो gold is only up 5.4 and silver is down 4.7, which is very typical. हमेशा गिरावट में silver हमेशा overdoes gold, and in the rise gold will do it initially. ये सब मैंने एक बार 3-4 एपिसोड के पहले कवर किए थे, द कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड मूवमेंट एंड सिल्वर मूवमेंट. तो आप हमारे पुराने वीडियोस जरूर जाके देखिएगा. हाँ, इसमें मैं ये बता दूं कि भाई पुराने वीडियोस का ये मतलब नहीं है कि उससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा. जरूर आपको बहुत बढ़िया सा वैल्यू मिलेगा, बिकॉज इन एवरी एपिसोड आई एम ट्राइंग टू कवर समथिंग न्यू और present the market in some sort of a new way, and that is why you'll always derive some value out of it, right? So now if you see what is at the bottom of the list, it is large cap. Large cap is minus 7.4. But what is more interesting is
Large cap was a 1 year return also minus 3.5. If you take a 2 year return, large cap had just a return of 1.9%. So this is not a very good news for large cap. Then if you go to 3 year return, then large cap comes up a little bit, 10.1%, then 10%, 12%, 12.9%. But the whole point here is large cap is not at the top of the stream about returns. रिटर्न में आप देखेंगे तो ओवरसीज इन्वेस्टिंग into the US, into China, etc., has been very, very profitable. US, if you see across the 3, 5, and 7 year returns, has given you 26, 18, and 21%. So that is why lots of people who were investing into mutual funds or directly investing into foreign asset classes have been a happy lot. So China has also been in there. And in 2026, if you come back to the first column, short-term debt has been doing pretty well, right? That is something which is doing pretty well, and long-term debt is also doing well, better than the mid cap, which is doing 2.4. So this is just a portrayal of what asset classes. अच्छा इससे सबसे मेन मैसेज क्या आता है कि भाई कोई भी एसेट क्लास particularly from equities वो consistently ऊपर रहता नहीं है. They keep churning around and they go shift places from sometimes small cap is up, sometimes mid cap is up. If you take a 10-year, 15-year return, mid cap has given very, very good returns. And if you take a 20-year return, also mid cap has given very good returns. तो बट देन लोगों का ऐसा धारणा रहता है कि भाई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूं. अरे लार्ज कैप में कोई और इन्वेस्ट करे जिसका लार्ज कैप एक प्लेइंग ग्राउंड है. बट अधिकतर लोग जो छोटे पैमाने के हैं, इन्वेस्टर है, जिसको रिटर्न से मतलब है, उसको ये प्लेन में ध्यान देना चाहिए एंड सी दैट मिड कैप ऑन अ 20 year basis has given a very good return. But in the more recent times, it is silver and gold that has really captured everybody's imagination. And now in 2026 first half, this is not the case. Silver has become negative. That is not to say कि silver का trend सब टूट गया. It is just that first half में silver ने आपको return नहीं दिया. If you had invested in 2026 के शुरुआत में आप इन्वेस्ट करते तो आपको रुपया नहीं मिलता. So this gives you an idea how everything churns around, and therefore there is never a buy it, shut it, fill it वाला किस्सा कभी होता ही नहीं. कभी मिड कैप है तो कभी स्मॉल कैप है तो कभी कमोडिटी है तो कभी डेट है. So all of this will keep churning around, and that is why we have to be on our toes as far as investing is concerned, right? So if you look at, since there is a lot of interest in gold and silver, मैंने कहा गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट भी कवर कर लूं. तो आप इधर देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स चार्ट ऑन द लेफ्ट and silver futures chart on the right, they are almost identical. Okay, they are almost identical in the in the kind of movement that they show. But then if you see silver has reacted more and bounced less. So that is why you are seeing silver's return is poorer off compared to gold's return. गोल्ड की रैली भी अच्छी थी और गोल्ड की गिरावट उतनी नहीं हुई जितनी सिल्वर की हुई. So right, and now if you see gold is trading near a support zone. तो इधर आप देखेंगे जो मैं एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल जो मार्क कर रखा हूं, gold is still trading above that, whereas silver has actually come and broken it once and then it is trying to rally. Rally is not very strong yet. तो आप नीचे देखेंगे तो ये एक ऑसिलेटर है जो हमने हमारे खुद के ऑसिलेटर बनाए हुए हैं. उसके अनुसार जो है it shows trendiness, and it's a very sensitive indicator also. So you also can see here that the red line, which actually represents a downtrend, the red line kind of kicked in from somewhere here. Okay, जब ये वापस से डाउन टर्न ले लिया था in early June, वहां से ये red line came on top and the red line has been in control. Similarly for silver, सिल्वर जो ये जो बड़ी गिरावट थी उसी में नेगेटिव हो गई. नेगेटिव होके यहाँ पर एक छोटा सा रैली था, बट यू कैन सी दैट रैली वाज वेरी लिमिटेड. उसकी जो ट्रिगर लाइन है वो ट्रिगर लाइन भी क्रॉस नहीं कर पाई, तो दैट मीन्स द रैली वाज वेरी फीबल.
तो ऐसे जब ये फीबल रैली होता है तो उसमें अपने को खरीदना नहीं है, उसमें अपने को बेचना सोचना है, right? So there are two information: don't buy and short. तो whichever suits you as a temperament, जो आपका टेम्परमेंट है या आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टाइल है, उसके अनुसार ये इंडिकेटर आपको यूज किया जा सकता है. सो इट शोड इन सिल्वर that this particular rally which you had, which took silver from somewhere just somewhere around 2 lakhs, and this is MCX silver, by the way. It took it to almost 50% gain from the bottom. It went up to 3 lakhs. That is by itself price wise a decent gain. But then, given the trend, this rally was weak and feeble. तो इसमें क्या है, ये इसमें अगर पार्टिसिपेट कर भी लिया आपने, ये एक आइलैंड रिवर्सल छोड़ करके नीचे आया या आइलैंड रिवर्सल छोड़ करके नीचे आया, तो इसका क्या मतलब है? आइलैंड रिवर्सल का जनरल प्रोजेक्शन होता है कि यू विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये आप देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट तक फिर आ गया वापस. तो अभी पैटर्न का जो इम्प्लीकेशन है वो खत्म हो चुका. नाउ सिल्वर इज ट्राइंग टू बिल्ड something new, but it is not finding sufficient momentum. You are still under the influence of the negative factor. So gold and silver both are likely to be in a bit of a ranging, and they are trying to find some reasons to go up. So यहाँ पर aggressive activity is not indicated. All right. So let's move on from gold and silver and go on to the next major item that we can see. अच्छा, ये एक चीज मिला मुझे नेट पे कि भाई अपना डोमेस्टिक इनफ्लो में तो कोई लेटअप ही नहीं है. वो तो खैर, आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग न्यू. ऑल ऑफ यू नो दैट डोमेस्टिक मूवमेंट, SIP वगैरह वगैरह तो चल ही रहा है. बट देन लुक एट द नंबर्स. आई पुट डाउन द नंबर्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टोटल डीमैट अकाउंट्स, क्योंकि बीच में आए थे कि डीमैट अकाउंट वगैरह बंद हो रहे हैं, नेट डीमैट अकाउंट ग्रोथ इज नॉट गुड एंड दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस. तो ये आप देखिए, FY21 से लेके अभी FY26 तक मैंने लिया है. दिस इज टिल मार्च बिकॉज इट्स अ फुल ईयर ऑफ FY26. तो आप देखेंगे तो देर इज अ स्टडी इंक्रीज इन द टोटल डीमैट अकाउंट्स. From 5.5 crores, it has now gone to 22.5 crores. That's a four-fold increase in the total amount of डीमैट अकाउंट. इसीलिए वो डीमैट अकाउंट्स के जरिए पैसा मार्केट में आते रहा है. न्यू अकाउंट्स विच आर बीन एडेड, तो ये तो पुराने अकाउंट्स होंगे, ये मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, वो सब तो ठीक है. ये यूनिक एडिशंस है. यूनिक एडिशंस में आप देखिए 3.5 crores, 4 crores, 3.5 crores. तो यूनिक एडिशन इज प्रेटी डिसेंट. 3-3.5 करोड़ हर एक साल ऐड हो रहे हैं. तो ये जो पैसे का जो फ्लो है मार्केट की तरफ, दैट विल कंटिन्यू एंड दैट विल कीप द फ्लैग फ्लाइंग फॉर द मार्केट. यहां पर आप देखेंगे क्योंकि ये अलग एक स्टाइल का चार्ट है. ये इसमें क्या दिखा रहा है? फाइनेंशियल सेविंग वर्सेस फिजिकल सेविंग. अच्छा, फाइनेंशियल सेविंग क्या है? वो है आपका स्टॉक्स है, आपका बॉन्ड्स है, ये सब है. फिजिकल सेविंग क्या है? गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ऐसा वैसा. ऑल ऑफ दीज आर देयर. नाउ इफ यू सी, आई हैव कंपेयर्ड टू द डिफरेंट कंट्रीज, USA, जापान, ब्राजील एंड इंडिया. इंडिया में जो फाइनेंशियल सेविंग्स है, दैट इज स्टिल अ लिटिल लो. इट इज स्टिल एट 46.7% compared to the physical savings, which are still at about 53%. It is among the highest in the world. So Indians are still a believer in the physical asset. They still want to buy land, they still want to buy gold and silver. तो ये जो मेंटालिटी है धीरे धीरे बदल रही है और अभी धीरे से ये फाइनेंशियल एसेट की ओर जा रही है. सो विच मीन्स वॉन्ट दैट द दिस प्रोग्रेस विच यू आर सीइंग, न्यू अकाउंट्स एडेड, टोटल डीमैट अकाउंट एडेड, ये डायरेक्टली कहाँ इंपैक्ट करेगा? फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल सेविंग्स की बढ़ोतरी में एसेट करेगा. और जब फिनेंशियल सेविंग्स व्हेन दे स्टार्ट इंक्रीजिंग, and that is when some real financial growth will happen, because the land will never give you dividend, gold and silver will never give you dividend. Financial savings will give you dividends and help your money to grow, right? And if you take long term CAGR of your real estate and gold and silver and all that, पिछले साल छोड़ दो, then they will all still be only around 8 to 10%, 10-11% से exceed होगा नहीं long term CAGR of your real estate and gold and bullion and all of that.
However, your long-term CAGR of your financial assets like stocks, etc., will be in the region of 12, 13, 15%. And that is what is the real kicker. So, more that goes into financial assets, the more the country benefits, more you and I benefit. तो ये जो ट्रेंड है टोटल डिमैट अकाउंट्स के और ये न्यू अकाउंट्स के एडिशन के, this is good news. And this fact that we have reached about 46%, we were much lower earlier if you compare. Now, compared to the world, we are still very low. The US is at 69%. And compared to that, we are only at 46.7%. So long, long way to go because we have a very, very big and wide and vibrant stock market as good as what is there in US. Maybe Brazil is also ahead of us, even though they do not have such a good market like us. But we still have a catching up to do. But that is because people still believe in फिजिकल एसेट्स इन इंडिया. तो ये धीरे धीरे बदल रहा है और ये जो बदलाव है ये एक अच्छी बात है. एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द मार्केट्स. सो दिस इज वन ऑफ द बुलिश रीजंस फॉर द एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म, राइट? ये दिस इज नॉट अ न्यूज फॉर टुमारो. ओके, लेट्स गो अहेड. तो अभी बहुत टाइम से बात हो रहा है कि यार एफआई बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये कैसा चलेगा, मार्केट नहीं चल सकता, ये वो. बट एफआई बेच रहा है ऐसा नहीं है कि एफआई तो खरीद भी रहा है. तो हियर आई जस्ट टुक सम लिस्ट ऑफ स्टॉक्स where the FI holding has actually increased. I have taken the period March 25 to March 26. पिछले एक साल में जो चीज में एफआई की जो इन्वेस्टमेंट है या ओनरशिप है, वेयर इट हैज गॉन अप. वी हैव सीन एंड आई हैव माई सेल्फ कवर्ड इन अर्लियर वन कि भाई एफआई की जो टोटल होल्डिंग है, ये जो टोटल होल्डिंग 21% के आसपास था, वो घट घट के अभी 14-15% पे आ गया है. एंड इट इज ऑन अ लो, but that is on an overall basis. But then they are also active in several pockets. और वो जो पॉकेट्स में है वहां पर अपन उसको स्पॉट कर सकते हैं. तो बहुत बढ़िया सा वहां पे अपने को मुनाफा मिलने का नौबत है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस ऑल्सो. जस्ट लुकिंग एट द ब्रॉड फिगर, अरे यार आज एफआई ने फिर बेच दिया 2,000 करोड़, 3,000 करोड़. अरे बेच रहे तो वो कहीं ना कहीं रुपया डाल भी रहे. एंड दे आर टेकिंग अप. लुक एट एमटार. एमटार हैड अ absolutely almost vertical rise. अगर आप, if you see the chart of MTAR, it's a fantastic chart. They went from 6.74 to 17.31%. So that's a 157% increase in their FI holding. और ये प्राइस को देखे क्या हुआ. दिस इज द प्राइस इंक्रीज. 1,600 रुपया था मार्च ऑफ 2025 में. वहां से कहां पहुंच गया ये एमटार. एमटार रीच 7,900 रुपीज. व्हाट अ टेरिफिक जंप. और इसमें कितना रुपया बन सकता था अगर आप देखेंगे. तो ये जो एफआई बेच रहा है, इससे अपन मायूस नहीं हो गए. दैट इज होल माय एंटायर पॉइंट इन दिस. तो ऐसा एक कुछ 10-15 स्टॉक के मैंने लिस्ट यहाँ पर किया हुआ है. आप चाहे तो इसका एक फोटो ले सकते हैं और बाद में यू कैन नोट डाउन, गो एंड रिसर्च इट योरसेल्फ. एंड दिस इज बाय नो मीन्स एनी रिकमेंडेशन. कोई भी स्टॉक का मैं चार्ट्स एंड बियॉन्ड में बात कर रहा हूँ, इसमें किसी में मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है. These are all being provided only for knowledge purposes because I'm trying to put them in the context of what is happening in the market. ठीक है. तो ये आप देखिए, एथर एनर्जी है 7% का, 17%. ये भी करीबन 150% की इंक्रीज हो गई होल्डिंग में. और 341 का 998, दैट्स 193% इंक्रीज इन द प्राइस. Right, and this is 392% increase in the price. Of course, they will all react differently because depending upon what is the sector and what is the kind of changes that get produced, the price reaction will be quite different. But then all of these stocks are showing some definite increase. अच्छा, इधर आप देखेंगे तो ये क्या है, स्काई गोल्ड छोटा है, पृथ्वी स्पेशलिटी केमिकल छोटा है 0.4% टू 1.38%. अब 1.38% आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन इट इज अ 245% इंक्रीज इन दी एफआई होल्डिंग. परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत बहुत ही बड़ा है. तो आप इधर स्टॉक को देखिए, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल क्या हुआ, 2300 से
4500 का भाव हो गया. दैट इज 54% ऑन अ हाई बेस. ऑलरेडी 2300 रुपये में स्टॉक था और ये स्पेशलिटी केमिकल था. दैट सेक्टर वाज अंडर प्रेशर. बट अंडर प्रेशर सेक्टर में भी कोई एफआई का इतना कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग होता है, 250% उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है. हालांकि इन क्वांटम इट सीम्स टू बी वेरी स्मॉल, but it is compared to the base 0.4% to 1 point, what was it? Yeah, 1.38%. That is actually a 245% increase. So this is a increase that you have to look at. अच्छा, यहाँ देखिए कुछ और है, 800%. ये क्या है? डायमंड पावर 0.04%, मिनिस्क्यूल होल्डिंग ना के बराबर था. वहां से लेके 0.36%, नथिंग मेजर, बट देन बिकॉज दिस बेस इज स्मॉल, दिस इज लुकिंग गुड. और यहाँ पे स्टॉक देखिए, स्टॉक हैज ग्रोन अप बाय 77%. तो मेरा इसमें मेन पॉइंट इन डूइंग दिस इज टू टेल यू दैट इफ यू कीप ट्रैक ऑफ समथिंग लाइक दिस, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर यू टू मेक डिसेंट मनी. तो आप इधर देखिए, चिल्लर पिल्लर रिटर्न कोई भी स्टॉक में नहीं है. 54-51% इज द लीस्ट एंड 390% इज द हाइएस्ट. तो ऐसे कोई स्टॉक्स में आप ध्यान देवे. अपोलो माइक्रो 0.93 टू 3.64. हाँ, अभी आज का न्यूज है, टुडे 7 जुलाई का न्यूज है कि अपोलो माइक्रो इज डूइंग सम follow up, OFS action and QIP, and they are placing some more stock. And that is going to bring in even further institutional players into it. So this is a stock that you should perhaps keep in your mind. क्योंकि ऑलरेडी एफआई की जो है 0.93 की 3.64 हो चुका है. 291% की इंक्रीज है. और स्टॉक में देखिए 197 वाला 385 हो चुका, 95%. अब जो है कुछ प्राइस हैज गॉन अप फर्दर. आई थिंक आई सॉ द प्राइस समवेयर एट अबाउट 422 और 23. एंड द करंट जो इशू हो रहा है अभी, आज आज वो खुल रहा है रिटेल के लिए और कल कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए होगा. और प्रमोटर्स भी आर आर देयर एंड ऑल दैट. सो the discount that is being offered is very marginal, which means that there is a high demand for the stocks. So ये सारे जो stocks है, आपको इसमें डीपर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कोई ना कोई विनर आपको यहाँ से मिलने की बहुत अच्छी संभावना है. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ पुटिंग सम ऑफ दीज फॉरवर्ड. आई होप यू understood my focus on bringing this to your notice.